Hello everyone, today we'll be learning about maintenance management. It is one of the subtopic under production and operation management, that is an entire subject. It is one of the subtopic maintenance management. So when we talk about maintenance management, what is the first thing that comes up to your mind? Just remember that thing and go through the entire video. So maintenance management. Machinery, equipments, and tools are of high cost and are maintained properly till the life expectancy of machinery, equipment, and tools. So we know that in operation and production management, certainly we talk about machinery, equipments, and tools because they are used in production, and that is what we are learning. So these things, machinery, tools, equipments, ये बहुत costly आते हैं. They are very costly, so they can't be treated like trash or anything. They have to be taken care of. They are to be maintained properly. They have certain life expectancy, and they are to be treated properly till that life expectancy is over. Okay. So machinery, equipments, and tools are of high cost and are to be maintained properly till the life expectancy. Their operational and functional reliability. Their operational and functional reliability is maintained by maintenance management. Here comes the role of maintenance management. Their operational and functional reliability. So operational and functional reliability is maintained by maintenance management. Now what is operational and functional reliability? Operational efficiency is working capacity, while functional reliability is how much we can rely on a machinery, how much purpose the machinery can fulfill. So this is maintained by maintenance management. Why it is maintained by maintenance management? So that machinery, equipments, and tools can work effectively, efficiently, and work with its full operational efficiency. मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्यों हेल्प करता है हमें? वाई इट हेल्प्स अस? सबसे पहले मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स बहुत महंगे आते हैं, उनकी हाई कॉस्ट होती है. ऐसा नहीं कि आपने अभी एक ख़राब हुआ फिर आपने आ रहे हैं, नहीं. दे आर ऑफ हाई कॉस्ट, लाइक दे कम इन लैक्स, इवन इन crores. So they are of high cost and are to be maintained properly. For this purpose, we have maintenance management. It helps in maintaining the reliability or functional reliability and operational efficiency of a machinery so that the machinery can run for like a long period of time and can work effectively, efficiently with its full operational efficiency, like with its full working capacity, and we can fully rely on that machinery. Now you must be thinking that if we maintain a machinery, will it assure us 100%? Yes, but there are certainties, like if properly maintained, often machineries work more than the expected life. You must have seen fridges or televisions at your home, television or fridge you must be having. So you must have noticed that there are certain machineries at our home that have crossed their life expectancy, but they are still running. Like finally, they are serving the purpose they were made of, not exactly as how they were back then when they were new, but it is certainly like quite fine. They are still suited for the purpose. So, if the machineries are properly maintained, then the machineries can work more than the expected life. Maintenance won't give you 100% assurance. Nothing can give you 100% assurance because there is always a risk of failure. We don't know, it's machine, right? We don't know, it can go wrong sometimes. So it's like we don't have 100% assurance, but certainly if maintained properly, then it can run for the more than the expected years. अगर मेंटेनेंस अच्छा होगा तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और फंक्शनल रिलायबिलिटी भी इंक्रीज होगी. I hope it is very clear. Now, what if we don't maintain our machinery properly? What are the consequences we'll bear? So we have like 11 steps if we don't maintain machinery. अगर मशीनरी का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है? सडन ब्रेकडाउन हो सकता है. कभी भी मशीनरी काम करना बंद कर देगी. अगर मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया, सो व्हाट विल हैपन? प्रोडक्शन रुक जाएगा ऑब्वियसली. मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया, मशीनरी के ऊपर डिपेंडेंट है, अब प्रोडक्शन रुक जाएगा.
यानी मशीनरी रुक चुकी है, तो आगे के स्टेप्स भी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे सब्सिक्वेंट मशीनरी स्टॉपेज की वजह से। जो फर्दर स्टेप्स दैट वर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन दैट विल स्टॉप। इससे क्या बढ़ेगा, मशीन आइडल टाइम, मशीन का आइडल टाइम, मशीन खाली पड़ी रहेगी, वो उस टाइम पे जब प्रोड्यूस कर सकती थी वो खाली पड़ी है, सो उससे क्या बढ़ रहा है, मशीन का आइडल टाइम। इसके साथ साथ लेबर आइडल टाइम भी इंक्रीज़ होगा। अब जो मशीनरी पे काम कर रहे थे लेबर्स, उनका भी आइडल टाइम इंक्रीज़ होगा, उन्हें पे तो करना ही पड़ेगा, उनका फॉल्ट तो है नहीं, क्योंकि मेंटेन नहीं हुआ तो एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉल्ट है, विल हैव टू पे द लेबर्स, तो उनका भी आइडल टाइम बढ़ा। अब क्योंकि कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो फिर डिलीवरी में डिले होगा, अब डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पाएगी, देर हो जाएगी उसमें। इससे क्या होगा, गुडविल डिक्रीज़ होगी। अब हम टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे तो हमारी कैसी इमेज बनेगी, ऑब्वियसली यू नो इट बेटर, सो गुडविल भी डिक्रीज़ होगी। कॉम्पिटिटर को इसमें अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा, हमारा शेयर लॉस भी होगा और एम्प्लॉय मोराल भी डाउन हो सकता है। जैसे एम्प्लॉय मोराल ऐसे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की हालत देख के एम्प्लॉय मोराल ऐसे हो सकता है डाउन कि सपोज मशीनरी ख़राब है एंड सम लेबर इज़ वर्किंग ऑन इट एंड बाई चांस if he met an accident because of that machinery failure, so बाकी एम्प्लॉयज़ अगर ये देखेंगे तो उनका भी मोराल क्या होगा, डाउन हो जाएगा, and will have to pay the accidental employee from workman compensation fund. So overall it will be the entire loss for an organization. We won't be able to produce nice quality products, so our organization will have to bear the loss. That is why maintenance of machinery is important, and that is why we need maintenance management. I hope it is pretty clear to you now. Now let's see how many types of maintenance management we have. There are types of maintenance. Basically maintenance के आपके होते हैं दो types. One is replace or repair maintenance, and the second one is preventive maintenance. Very easy, they are very easy. First one is, you can call it repair or replace maintenance, and the second one is preventive maintenance. So replace and repair maintenance is, as the word says, जैसे ही हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है और वो ख़राब हो गया, तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो हम उसे रिपेयर रिप्लेस कर देंगे या फिर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं शुरू से। अब सोचिए मेरे पास कोई मशीनरी है, इट इज़ ऑफ 500, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, इट इज़ ऑफ 500, और उसमें एक बैटरी लगती है दैट इज़ ऑफ अराउंड 400, फिर उसका चार्जर है। अब वो मशीनरी ख़राब हो गई, तो ऐसी मशीनरी को और दोबारा मुझे वो मशीनरी चलानी है तो मुझे 400 की बैटरी लेनी पड़ेगी, फिर उसका चार्जर लेना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट फिर से वही 500 के अराउंड बैटरी है, तो मैं उसका मेंटेनेंस नहीं करूँगी, आई जस्ट रिपेयर और रिप्लेस इट, ओके, आई वोंट मेंटेन इट, मैं उसको उतना टाइम नहीं दूँगी उस मशीनरी को डेली, आई जस्ट रिपेयर और रिप्लेस दैट मशीनरी विद द न्यू वन. So here we choose replace or repair maintenance. While what is preventive maintenance? Suppose I have a machinery that is of like 20 lakhs, मेरे पास कोई 20 लाख की मशीनरी है, और अगर मैं उसे टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करूँगी और वो ख़राब हो गई तो मुझे वापस से 20 लाख देने पड़ेंगे और वो मशीनरी मुझे फिर खरीदनी पड़ेगी. बट इफ़ आई मेंटेन टाइमली, अगर मैं उसे टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस करती रहूँगी, चेक करती रहूँगी, सो आई वोंट हैव टू बेयर दैट मच कॉस्ट. It is based on two philosophies. Basically, preventive maintenance दो philosophy पे based है. First is a stitch in time saves time, and second is precautions are better than cure. ओके, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अगर हम टाइम पे एक स्टिच लगा देंगे तो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए बेफिक्र होना पड़ेगा. अब पता चला यहाँ से ये पेज फटा है, अगर मैं इसे अभी चिपका दूँगी तो फिर क्या हो जाएगा, आई कैन सेव दिस पेज, मैंने इसको छोड़ दिया, फिर ये यहाँ से और फटा और फटा और फटा, देन आई विल हैव टू जस्ट मेक इट प्रॉपर एंटायरली. So it's like a stitch in time saves 9, and the second one is precautions are better than cure. मैं पहले से ही इस नोटबुक को अच्छे से रखूँगी, काफ़ी मेंटेन करके कवर लगा के इसमें प्रॉपरली पढ़ूँगी, इससे कहीं इधर उधर फेंकूँगी नहीं, प्रॉपर जगह पे रखूँगी पढ़ने के बाद.
सो दीज आर द प्रिकॉशंस आई एम टेकिंग. तो मुझे इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई एम मेंटेनिंग इट प्रॉपरली, सो इट विल वर्क प्रॉपरली. सो इट इज़ प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर. अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के भी दो टाइप्स हैं. So preventive maintenance is also bifurcated into two types. One is planned maintenance and other one is autonomous maintenance. Autonomous maintenance, or you can say regular maintenance. So planned maintenance is like आपने monthly कर लिया, weekly कर लिया या फिर yearly हो रहा है किसी चीज़ का maintenance, तो वो है planned maintenance. एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, उस टाइम पे आपको उसको मेंटेन करना है, दैट्स इट. रेगुलर और ऑटोनॉमस मेंटेनेंस यू नीड टू चेक इट डेली. रोज़ सुबह या शाम को या किसी एक टाइम पे दिन के आपको वो चीज़ सही करनी है या साफ़ करनी है, कुछ क्लीनिंग करनी है, दैट इज़ ऑटोनॉमस. रेगुलर मेंटेनेंस लाइक प्लान मेंटेनेंस का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. आप सबके पास कोई ना कोई व्हीकल होगा. सपोज यू हैव अ स्कूटी और समथिंग, सो you know at what time we need to go to the maintenance management and we need to say that ठीक है हमें इसका मेंटेनेंस करवाना है, इसकी इंश्योरेंस करानी है ना. सो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अब आप रोज़ तो नहीं होता भाई आज सुबह स्कूटी निकालनी है और हमें इसको सही करवाने जाना है या फिर इसका मेंटेनेंस करवाना है. नो. सो इट कम्स अंडर प्लान मेंटेनेंस. We have planned that after 3 months we'll go for its maintenance. That's planned. And autonomous regular is, suppose you have some sort of, like you have a juicer that's of 10,000 rupees and you drink juice daily in the morning. So after drinking the juice you'll have to clean the machinery. अब ऐसा तो नहीं कर सकते आज जूस बना दिया अब छोड़ दो मशीनरी को, आप कल जूस बनाएंगे देखी जाएगी जो. नो, ख़राब हो जाएगी. if you won't maintain it, it will go to trash. Okay. So this was all about maintenance management. A quick recap I'd like to give you. Maintenance management, machinery, equipments and tools are of high cost and are to be maintained properly till the life expectancy. मशीनरीज ही हमारी बहुत हाई कॉस्ट की आती हैं तो हमें इन्हें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जब तक इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. अगर हम मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे तो फिर वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करेंगी. लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी लाइफ जो उनकी एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा भी वर्क कर सकती हैं. मेंटेनेंस मैनेजमेंट हेल्प करता है हमें मशीनरी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फंक्शनल रिलायबिलिटी बढ़ाने में. ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज़ काम करने की क्षमता, दैट इज़ वर्किंग कैपेसिटी, वाइल फंक्शनल रिलायबिलिटी इज़ हाउ मच आई कैन रिलाई ऑन अ पर्टिकुलर मशीनरी, हाउ मच पर्पस द मशीनरी कैन फुलफिल. Okay, so maintenance can't give you 100% assurance that okay 100% assured हो गए हमने मेंटेन कर लिया, it will run smoothly throughout. No, there is still a chance of failure. ओके. सो मेंटेनेंस अगर अच्छा रहेगा तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसके साथ साथ क्या बढ़ेगी, फंक्शनल रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी. अब अगर मेंटेनेंस नहीं करा तो सडन ब्रेक डाउन हो सकता है, यानी मशीनरीज काम करना बंद कर देंगी. काम करना बंद करेंगी तो प्रोडक्शन में हॉल्ट आ जाएगा, यानी प्रोडक्शन रुक जाएगा. प्रोडक्शन रुक गया तो मशीनरी स्टॉपेज हो गया, मशीनरी भी स्टॉप हो गई है तो मशीन का आइडल टाइम, खाली समय बढ़ता जा रहा है. उसके साथ साथ जो उस मशीन पे काम कर रहा था लेबर, उसका भी आइडल टाइम बढ़ता जाएगा. अब क्योंकि प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है तो डिले इन डिलीवरी टाइम से नहीं होगा, उससे हमारी गुडविल डिक्रीज़ होगी, कॉम्पिटिटर को एडवांटेज मिलेगा, अब वो हमसे अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है, अच्छा बेच सकता है, तो इंटायरली हमारा शेयर लॉस होगा. शेयर लॉस के साथ साथ एम्प्लॉय मोराल भी डाउन हो सकता है. सपोज जो मशीनरी ख़राब हुई उस पर कोई लेबर वर्क कर रहा था एंड सडन स्टॉपेज के साथ कुछ सडन एक्सीडेंट हो गया लेबर के साथ, तो फिर क्या होगा, उसे एक तो हमें पे करना पड़ेगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से, प्लस उसे अगर बाकी एम्प्लॉयज़ देखेंगे तो वो सोचेंगे कि यहाँ सेफ्टी तो है ही नहीं, तो उनका भी मोराल डाउन हो सकता है. सो इट इज़ एन ओवरऑल लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आई होप मेंटेनेंस मैनेजमेंट इज़ क्लियर टू यू ऑल.